Good morning, students. Today we'll start the third chapter of class 9. This chapter is atoms and molecules. The chapter is atoms and molecules. This one is the third chapter of class 9 in chemistry, and this one is very important chapter. In this chapter we'll learn so many things like the different laws of chemical combinations. We'll discuss about the atomic theory given by John Dalton. We'll discuss how to write the electronic configuration of elements shortly in this chapter. We'll discuss about valency. We'll discuss about atomic mass, molecular mass. We also discuss about molecule. We'll learn how to write the formula of a chemical compound. We'll discuss about some important practical based questions related to this chapter. We also learn the mole concept, which one is the most important topic of class 9. This topic, some numericals on the basis of this topic will be faced by you in class 11 also. So that's why this chapter is very important. So without wasting time, let us start today's class. So what happens, there's a history of chemistry where some scientists they thought about matter. We already learned that matter are those substances which have mass and volume. We already learned that matter are those substances which have mass and volume. The amount of matter present within a substance, that is called mass. If we take the example of a chalk, then chalk is made up of chalk particles. The amount of chalk particles present within the chalk is called the mass of that chalk. And the volume is the space occupied by any matter is called volume. If I keep this pen on my hand, then it will occupy some space. It will occupy some space on my hand. The space occupied by this particle, this substance, or this matter is called the volume of this matter, right? Those substances which have both mass and volume, they are called matter. If we take the example of sugar, salt, gold, iron, okay, the pen that we are using now, okay, pen, and so on, and so on. All are matter. Now, at first, the Indian philosopher Kanat, K-A-N-A-T, is the name of the scientist. He was an Indian philosopher. He said that all the matter are made up of particles. What is it? That matter are made up of particles. Means, if we break any matter, suppose if I break this pen, we will get two parts of this pen. If we break that part again and again, then we will get the smaller parts. At the last, we will get the smallest part of the matter, which cannot be broken. Okay? Means we can say by adding the smallest part, by combining the smallest part again and again, we'll get this matter back, right? Suppose आपके पास एक छोटा सा पत्थर जैसा है, अब उसको तोड़ रहे हो, उसको तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में बहुत छोटा एक पत्थर जैसा मिलेगा, बहुत ही छोटे, जिसको और नहीं तोड़ सकते। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि वो जो छोटा सा, जो सबसे छोटा जो पत्थर जो बच गया लास्ट में, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे छोटे छोटे पत्थर को अगर हम लोग ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें वो बड़ा वाला पत्थर मिलेगा जिसको हम लोग स्टार्टिंग में तोड़ रहे थे। इट मीन्स दैट ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल particles. Okay,
It was a concept given by Conrad. He was the Indian philosopher. So I think now it is clear that according to Conrad, matter are made up of very small particles. You have to write this in your copy. Okay. According to Conrad, or sometimes it pronounced as Conrad. Okay. All the matter are made up of very small particles. You can also say that the matter are made up of very tiny particles. Tiny means small. Okay. So, but what is the name of this particle? What is the name of the smallest particle of matter? It was not discussed by Conrad. But after that, one new scientist came named John Dalton. John Dalton said that all the matter are made up of very tiny particles, and the smallest particle of matter is called atom. Okay, what I'm saying, smallest particle of matter is called atom. Okay, now this one is also the definition of atom. Suppose the question is like that, what do you mean by atom? You have to write this in your copy also, that what do you mean by atom? The answer is that smallest particle of matter is called atom. Okay, एक मैटर को अगर हम लोग तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में सबसे छोटा एक पार्टिकल हमें मिलेगा, सबसे छोटा पार्टिकल को ही हम लोग एटम बोलेंगे. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज एटम. Repeat, what is atom? The smallest particle of matter is called atom, according to John Dalton. Right? John Dalton said that the smallest particle of matter is called atom. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े. अब इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनके आगे पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एटम्स के बारे में विस्तार से बहुत कुछ बोले हैं. हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं. अब एक जगह आपको याद रखना है कि एटम्स जो होते हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन भी करते हैं. ओके, एटम्स कंबाइन विद अनदर एटम. अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो एटम्स कैन कंबाइन विद अनदर एटम एंड दे फॉर्म सम अदर सब्सटेंसेस ऑब्वियसली. हाउ दे विल कंबाइन एंड व्हाई दे कंबाइन, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. Now here we have to learn about two main laws of combination. Atoms can combine chemically. Means when atoms combine, maybe there are some changes of chemicals. Maybe there are some changes in properties. Okay. If different atoms combine, then obviously the same phenomenon takes place. Although अभी आपको ये जगह समझ में नहीं आएगा, ये आगे धीरे धीरे क्लियर होगा. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उसमें कुछ लॉ फॉलो होता है. ओके, दिस लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. There are two laws of chemical combination. We'll discuss about it in class 9. Although there are so many laws of chemical combination in higher classes, we'll discuss about them. Okay. In class 11, we'll discuss about the 5 different laws of chemical combination. But in class 9, we'll discuss only about 2 laws of chemical combination. Okay. First law, law of conservation of mass. Conservation of mass. This one is a very important law. Law of conservation of mass. Number 2, law of definite or constant proportion. In some books it is written that law of
definite proportion. In some books it is written law of constant proportion. Okay, कुछ बुक में ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, कुछ बुक में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है. अब कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नो. So we learn there are two laws of chemical combination. Number one, law of conservation of mass. Number two, law of definite proportion और constant proportion. ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ें. तो हम लोग हेडिंग करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट, अगर हम लोग लेट मी डिस्कस विद एन एग्जांपल. ओके, आई एम राइटिंग हियर C इज द सिंबल ऑफ कार्बन. हमें पता है C से हम लोग किसको लिखते हैं? कार्बन को लिखते हैं. When carbon reacts with oxygen, what it will form? It is very well known. Then carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Okay, C is carbon. It reacts with oxygen and it gives carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. This arrow represent the direction of the reaction. ये arrow दिखा रहा है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन प्रोड्यूस हो रहा है. Those substances which react are called reactants. Okay, reactants. Reactants are present at the left side of arrow, and this representation is called the chemical equation. Whatever it is written here, okay, C plus O2 arrow CO2, it is chemical equation. Now it is known that carbon is solid, oxygen is gas, and carbon dioxide that is produced, it is also gas. That's why we can represent the state of this matter just in first bracket. Like solid, for solid we'll write S, for gas we'll write G, for gas we'll write G. If it is liquid then we'll write L, okay, in small letter. Now those substances which are present at the left side of the arrow, they are called reactants. Reactants react to form a new substance. In a chemical reaction, reactants react to form a new substance. तो रिएक्टेंट क्या होते हैं कि जो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं. ठीक है, जो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे. नाउ व्हाटएवर द सब्सटेंस और substances which will be formed in a reaction, they are called product. Okay, product और एक से products. अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग प्रोडक्ट्स बोलेंगे. तो रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे. ठीक है, उसका हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड यील्ड लाइन. YIELD, यील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. किस साइड में रिएक्शन हो रहा है इसको डायरेक्ट करता है यील्ड लाइन. ठीक है, समझ में आ गया. तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, यील्ड लाइन क्या होता है. Reactants are those substances which reacts to form the new substance or substances, okay, are called reactant. Those substances which are formed after the reaction are called products, and the sign which represent the direction of the reaction, that is called yield line. Remember, reactants are always present at the left side of arrow, and products are present at the right side of the arrow, that is also called the yield line. Now suppose the question is that A plus B forms C plus D. Okay, name the reactants. So first we will say A plus B are the reactants, and name the products. We will say C plus D are the products. No, ये नहीं बोलना है. तो क्या बोलेंगे आप? A and B are the reactants. A और B है ना, ये दोनों प्लस साइन को हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया. हम लोग बोलेंगे A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है. ठीक है,
चलो आगे नाउ आई एम इरेजिंग दिस, ओके, आई एम इरेजिंग now these are reactants and these are products. Here in this reaction the reactants are carbon and oxygen and the product is carbon dioxide. Now let me calculate the mass of carbon. We'll discuss about it in this chapter also, okay, about atomic mass. Here I'm just writing the atomic mass, although we'll discuss about it in details. Okay, later. एटॉमिक मास हम अभी लिख रहे हैं, बट इसके बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है. Now just I am telling you the atomic mass of the elements and just try to remember at now that what are the atomic masses of the elements. हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों हो रहा है. Now कार्बन its atomic mass is 12. तो इसको कार्बन का मास मान के चलो, ठीक, 12. I am just writing 12 ग्राम. ओके, मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. Oxygen O2, the mass of one oxygen for one O, it is 16. There are two oxygen, that's why I am multiplying this by 2. Okay, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो दोनों का हो गया 16 into 2, that is 32. I am writing ग्राम here. मैं फिर से बोल रहा हूँ ये ग्राम होगा या दूसरा कुछ होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे. Now if we add this 2, then we will get 12 plus 32, that is 44 gram. Well, 44 gram is the total mass of reactants. Okay, there are two reactants, that's why the total mass of the reactants, that is 44. Clear? 44 gram. Now in case of carbon dioxide, let us calculate the total mass. For carbon, the mass is 12. For one oxygen, the mass is 16. There are two oxygen atoms in the carbon dioxide molecule. So, 16 into 2. Now, the total mass it will be 44 gram. This one is the total mass of product. Total mass of product. So, on the basis of this, what you can say? अब क्या बोल सकते हैं इसके बेसिस में? अब ये बोलोगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, अब क्या बोलेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मतलब एक रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन में टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा. ठीक है, ऑलवेज इक्वल होगा. याद रखिए इसको कि रिएक्टेंट का टोटल मास, लेफ्ट साइड में जो टोटल मास होगा, राइट साइड में भी टोटल मास उतना ही होगा. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो एक जगह समझो, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास ज़्यादा होता, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास ज़्यादा होता तो क्या समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है उससे? मीन्स समहाउ इन द रिएक्शन मास इज क्रिएटेड. मास जरूर कहीं ना कहीं से ऐड हुआ होगा या फिर मास कहीं ना कहीं से इंक्रीज हुआ होगा, है ना, मास बनाया गया होगा. बट एज the total mass of the reactant and total mass of the products are equal, it means the mass are not created or mass is not created here. इसका मतलब ये होता है कि मास यहाँ पे नहीं बना है. ओके, मास इंक्रीज नहीं हुआ. नाउ इफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो मास अगर कम हो जाएगा तो उसका मतलब होता है कि मास डिस्ट्रॉय हुआ है ना. मास क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय हुआ है, नष्ट हुआ है. ठीक है, समझ में आ रहा है? आप दुकान से 1 kg चावल लाए थे, घर में आके फिर से उसको नाप लिए, फिर से उसको मेज़र किए, उसका वेट लिए, तो आपको 1.5 kg मिला, 1.5 kg. इसका मतलब 0.5 kg क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, 500 ग्राम इंक्रीज हुआ. बट मान लो कि आप 1 kg लाए थे, घर आके 800 ग्राम मिला, मीन्स 200 ग्राम क्या हुआ होगा? वेस्ट हुआ होगा, गिर गया होगा.
बट अगर दोनों सेम हो रहे हैं, दुकान से जितना लेके के आए आप घर में भी चेक कर रहे हो उतना ही है, इट मीन्स कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ. इट मीन्स दैट द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मास ना क्रिएट हुआ है रिएक्शन में, ना डिस्ट्रॉय हुआ है. इज इट क्लियर कि मास क्रिएट भी नहीं हुआ है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है. अब देखो, तो इस लॉ को हम लोग कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, डिस्ट्रॉय स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ गलती होती है ठीक कर लेना. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction. It means mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass reaction में create भी नहीं होता है ना destroy होता है. It means that the total mass of reactant, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे it means that total mass of reactants is equal to the total mass of products. अगर ये दोनों सेम ना होते तो हम लोग बोलते हैं आइदर मास क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ है. जैसे कि ये दोनों सेम आ रहा है, इट मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर दैट the total mass of the reactants must be equal to the total mass of products. Now I am giving you one question. Right? Clear है? लिख लिए सब? इरेज कर देते हैं इसको. Okay. Now suppose A and B they react to form C and D. Okay, C and D. 3 gram of A reacts with 8 gram of B. Okay, reacts with 8 gram of B to form X gram of C and 5 gram of D. Okay, 5 gram of D. Find the value of X. The value of X. Okay, that's the question. So I think now it is clear that what is the value of X. तो सब लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो. ओके, चलिए ट्राई कर लिया, हो गया. चलिए करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the total mass of product. Okay, it means the total mass of reactants, let me calculate the total mass of, okay, this portion is not visible, I am writing here, total mass of reactants, that is 3 plus 8, 11 gram, and here total mass of products, equal to X plus 5 gram. Correct? As we know that total mass of reactants and total mass of products are equal. That's why we can write X plus 5 is equal to 11. Now X is equal to 11 plus साइन इस तरफ आता है तो माइनस हो जाता है. 11 minus 5, X is equal to 6. So the answer of X is 6. Okay, I think now it's clear. So इस टाइप के अगर कुछ क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली आप आंसर दे सकते हैं. ठीक है, इसको ट्राई करें. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और भी 1-2 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो इतना तक देखें, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.